Friends, and in this session, we are going to take up 5 questions each and try to see and understand that whether we have been able to raise the level and also what are the elements which are to be seen in the answer. Are we able to portray those ideas? So let's go to the question number one. The traditional theatre form of India reflects the ideals and emotions of the society and an individual role in the community. Discuss with examples. So it's a very broad question which wants a candidate to understand the importance of theatre and such creative arts in society, how they have been so much integral to the folk life and to the village life and to even urban life, and how it is so much unseen also that even if you are not a passionate person who loves arts, then still also it is making a difference. So traditional theatre, it's saying that how it reflects ideas and emotions, that is very important. Then evolving based on society and individual progress, it is an avenue for showcasing emotion and creativity in performance as shown by Natya Shastra. So Natya Shastra is the core, Natya Shastra is the base, but it is not, we are not saying that today also directly the elements of Natya Shastra are reflected directly. They are impacting, they are the soul, they are the source. That's what one can say. It reflects ideas and emotion society by theatre like Tamasha in Maharashtra. Community belonging and fraternity is highlighted. First of all, it is a kind of a communication. Traditional theater is a communication. Traditional theater is a kind of a medium by which society interact with each other. That is very important to understand. Dialects and the theme which are taken up, they are very popular theme, which makes a common man curious, which makes common person feel that we are being counted. You know that like Marathi is saying social issues like discrimination, gender disparities is put up. I agree. Not just that, social awareness. Most important thing is that awareness. The traditional theatre acts as a medium for awareness too. Offers scope for society to preserve the fabric tradition like sadachar and shishtachar. I like that. It's okay. At the same time, it reflects ideas and emotions and the individual role. Taking example of Ras Leela Natak in surrounding UP. So structure of the question is very good, and even there is a there is a theme and there is a flow in the answer, and uh, not seeing very critically, but still answer and the language is evolving. So bhakti towards God in Ras Leela, spirit of sacrifice. It offers solace to individual. I agree. Intangible heritage of family traditions and to preserve. Thus, theatres are area of importance, heritage protected and promoted by Sangeet Natak academies. Actually, the whole point that how theaters help in alleviating mental issues. It is a kind of a it is a kind of a stress buster, and all those kinds of ideas also must be brought here. Provide an account of historical and architectural importance of Sanchi Stupa, historical and architecture, how it inspired the future architecture in India. Sanchi Stupa was an important modern Shunga architecture, which had an element of elaborate, very good start. Present in trading routes between Uttar Patha and Dakshin Patha. Okay, Stupa building, an important landmark for connecting Buddhist iconography and ideas. It was also location where royal edicts and Sanchi Stupa. Okay, fine, that is also fine, no problem. So historically, one can say that okay, fine, certain elements are visible, so I would not say much. Architecturally is very logically shown here, like Chhatri, Harmika, Anda, and even Torana, and Pradakshina Path is also shown. So standalone dome structure, bricks and stone, unique, evolved towards Chaitya Vihara, using common language in narrative script, understanding Brahmi script and Jataka tales. It inspired future October dome making as Indo-Islamic architecture is a good point. Narrative art panels, large toranas, elaborative Dravidian architecture. So very clarity is there, scientific elements are there. So won't be saying much that it is missing. Definitely, it is bringing with lot of calmness. One can see in the answer. Bhagat Singh made a real breakthrough in terms of revolutionary ideology and the goal of revolution and from revolutionary struggle. So very philosophical statement, very roundabout statement. You can always have to bring everything whatever you know in a very smart way. Revolution goals and idea present society based on individual heroism towards specific grievances, but it evolved more multidimensional to Bhagat Singh. Okay, fine. In terms of revolutionary ideology and goals, Bhagat Singh ideology was not case specific but broader. बिल्कुल सही बात है. It was for nation building, socialism, ideological backing, institutional structures were there. The goal of Bhagat Singh was Swaraj society, not only the British, but they were also towards the layer.
towards larger revolutionary. So, okay, fine. If you're talking about British here, one must also bring the idea of how Bhagat Singh was also against zamindars, also against landlords, also against money lenders. ये आना चाहिए था जो missing है. And then different stand with grievances specific chapter, Shapati Brothers, 1897. This revolution struggle laid down a new pattern that is justified proportional violence. We not saying by the end of his glorious glorious contribution, and by the time he was sacrificing his life for Mother India, Bhagat Singh was of the view that violence will not help, but then there has to be active participation. Ahimsa, fasting, all these elements which he is showing like idealism in his struggle. But he was very, very much inspired by socialist ideas, where he was saying that actually the real success would be only when the last mile connectivity, last person is going to get what it deserves. So those that broad idea should be coming up, not that he was standing for proportional violence. He was not even saying that. He was saying that fighting against British is one goal, then fighting against poverty, fighting against zamindar, fighting against landlords, fighting against red tapeism whenever the new government of India comes up, and then fight must be for equal rights for women, and then youth, Naujawan must be against drugs, must be against any kind of anti-social activities. Then you can only justify. जो ऊपर क्वेश्चन है. Meiji Restoration, 1868, discuss the significance of Japan, Japanese society, political values, virtues, culture, factor. You are talking about public anger against him, against humiliation faced by Shogun. ठीक है. Shogun deep nepotism, corruption, isolationist attitude. Okay, ठीक है. Technological. Middle class was demanding reforms. International pressure from the emerging colonial powers like USA, Britain, France, Germany. Meiji Restoration significant. And then you are talking about it back emperor to real executive. ठीक बात है. Japanese society slowly modernized and industrialized due to student that is professor exchange program, immigration, okay, foreign investment from Britain. It helped in the growth of MSME and ITI. Japan slowly became new contender for regional power. It can even defeat Russia in 1905. Okay, fine. It is believed that a nation is an imagined community held together by common belief, history, political inspiration. In this concept, discuss what ways of India as a nation is also bring about the threat to the concept of Indian nationhood. So India as a nation is a very, very multifaceted flower, which is having such a great root. Indian civilization is an ingredient of so many aspects, whether it is way of life, whether it is geography, whether it is food, whether it is culture, whether it is fabric, whether it is occupation, everything comes together, and then mosaic of India comes into picture. Civilizational formulation interlinked with the idea code of dharmic values. Our dharmic values are sacred duty. Our sacred duty are non-religious in nature. That is very important to understand. Our dharma is not religion based. It is based on humanitarian values. Even Hinduism also promotes the ideals of humanity and not just particularly one religious idea. So cultural affinity, Megasthenes, come on a little bit, and then beyond Indus. Okay, unique characteristic of people. It could have been a little bit more broader. India is a nation, large subcontinent, diversity, language. So even India, so one has to bring the idea that even in this large subcontinent, there is continuity. There is continuity, okay? Doesn't mean large and small. There is a continuity. Even if you are wearing sari, then sari is the containing element. पैठनी हो, चाहे वो फिर कांजीवरम हो, चाहे फिर वो बनारस हो, चाहे फिर वो चंदेरी हो, sari is the continuum. So the idea of continuity is very important as far as Indian as a nation is concerned. तो समझ नहीं आएगा. Festivals, thousands of festivals are there, but beyond each festival is the nature. रंगोली है, तो नेचर से बन रही है वो. तोरण है तो आम के पत्ते ही हैं वो. आम के पत्ते हैं, केले के पत्ते हैं, पीपल के पत्ते हैं, तो नेचर वो है शेयर्ड एस्पेक्ट. प्लूरलिज्म. चलिए क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, चलिए आगे. थ्रेट. What is the threat to the concept of Indian nation?
Overemphasizing religion and ethnic linguistic causing societal division, vegetarianism versus not pluralism. So one threat, you can say one threat is a shallow understanding of diversity. That is the threat. Shallow understanding. हम सब आपस में अलग अलग हैं, किंतु हमारे अंदर एकता का भाव है, उसको समझने की जरूरत है. रीजनलिज्म एंड एथनिक डिवीजन अफेक्टिंग, देखिए मेरा, वही बात है, जो मेरा है वो आपका है, जो आपका है वो मेरा है, ऐसा वाला जो बात है ना, वो आएगा आपके. तो रीजनलिज्म और एथनिक डिवीजन अफेक्टिंग नेशनल यूनिटी. वन थ्रेट इज नॉट, रीजनलिज्म इज नॉट ए थ्रेट. अल्ट्रा रीजनलिज्म, अल्ट्रा नेशनलिज्म, वो है ना थ्रेट टू. स्मार्ट इज नॉट ए प्रॉब्लम, ओवर स्मार्ट इज ए प्रॉब्लम ना. तो वो सब लेके आना पड़ेगा. तो और दूसरा फिर देन फॉरगेटिंग आवर बेसिक यूनिवर्सल वैल्यूज, मतलब जो है जैसे रिलीजन का भी है. पहले दिया जलता था, दिए में ही लोग खुश होते थे, सरसों का तेल और दिया. अब क्या हो रहा है? अब जो है 50 तरीके की आपकी मोमबत्तियां हैं, 2 लाख तरीके के दिए हैं, 4 लाख तरीके की लाइट है, 6 लाख तरीके का आपका हाइड्रोजनेटेड डालडा का प्रोडक्ट बिक रहा है. कहाँ था पहला वो? हलवा बनता था बस घर में और खीर बन गई, वही मिठाई थी. अब किसी को चैन ही नहीं है, जब तक स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट. तो ये नेशन रोड को खतरे की जो बात है, वो धीरे धीरे इन्हीं चीजों को मिला के करेगी, क्योंकि आप प्रॉस्पर्स नहीं हो पाएंगे. लैक ऑफ प्रॉस्पेरिटी विल लीड टू, विल थ्रेटन, पॉवर्टी विल थ्रेटन, कल्चरल पॉवर्टी विल थ्रेटन. तो आई थिंक ऐसा आना चाहिए था, तो ये भी मजा नहीं आया. ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट द आइडियल्स एंड इमोशंस of society and individual role in community. Discuss with example. Traditional theatre forms connect with way of life. ठीक बात है, लैंग्वेज अच्छी है. ओके, आपने बता दिया नौटंकी रासलीला. ओके फाइन. स्वांग, तमाशा, थय्यम. ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स the social cultural fabric and its evolution in several ways. Fraternity and peace as the uniting force. Maintain the relevance of historical achievements. Worship of local heroes. I like the line worship of local heroes. Communal harmony and awareness through नौटंकी. बिल्कुल सही बात है. वे ऑफ एक्सप्रेशन एंड वाइडर रीच. तो लैंग्वेज इज ओके, की वर्ड्स आर विजिबल फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव, सो इट्स ओके. रोल ऑफ इंडिविजुअल इज एटलीस्ट अ फ्लो इज देयर, अ डायरेक्ट फ्लो इज देयर. So it is not too fact centric, but then flow is there. That's what one. Courage to speak truth, reinforcing duty and righteousness, and sacrifices for community is good. That is a very important point. Therefore, traditional theatre form the eternal message for it. So that is why without even mentioning कि नाट्यशास्त्र है क्या है, हमने उस बात को कह दिया. तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन वे टू पुट अप. इट कैन बी टेकन अप बाय अदर्स ऑल्सो. Provide an account of historical and architectural importance. So historical importance again, अशोका ने स्टार्ट किया जैसा अभी हमने पहले भी पढ़ा था, और उसके बाद जो है वो एक बुद्धिस्ट रिलीजन, बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ का बेस रखता है. इट इज बिगनिंग ऑफ पैन एशियन बुद्धिस्ट रिलीजन. सांची उसका एक तरीके से एग्जाम्पल है. फ्रॉम श्रीलंका टू जापान टू चाइना टू साउथ कोरिया टू इंडोनेशिया, ऑल एशियन, होल पैन एशियन जो डेवलप होगा, दैट इज वन ऑफ द एलिमेंट्स. So ठीक है, इट्स ओके. Couple of points were there in the first answer that we read, so that it could be appreciated. Even diagram of that diagram was more illustrative. Architectural pressure preserves the relics of Lord Buddha, rich cultural monumental heritage, UNESCO heritage site. The dome should be seen in various Indo-Islamic, so same point, that's fine. Circumambulatory path, the practice. This is, I like the point number 2. This is more broader. So certain facts can be taken up from the question number 1, but the flow and the ideas reflected in question number here, they must be taken up. So integration of both the answers is going to bring the best. Bhagat Singh made a real breakthrough. A real. So real breakthrough is what? That violence is not going to support. Individual heroism is also not going to support. Real revolutionary ideology is when everyone is awakened. Youth is awakened. And not just driving away British, but driving away all those vested interests, whether it is zamindar, whether it is landlord, whether it is capitalist, everyone must be fought upon. Real वो ये बोलना चाह रहे हैं. As freely, fearlessly adopted along with he emerged the post non-cooperation, strong belief in direct action. Oh अच्छा जी, क्या है ये direct action? Wrong हो गया यहाँ पे. Conceptually wrong होने के बाद चवन्नी का आंसर नहीं आएगा, चवन्नी के नंबर में नहीं आता. If you want to say that he had a strong belief in direct action means like पाकिस्तान का direct action था, तो आपका आंसर completely wrong हो गया. Bhagat Singh became more philosophical. He was reading
मार्क्सिस्ट, ही वाज रीडिंग सोशलिस्ट, ही वाज रीडिंग गांधी को भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो ब्रॉड हो गए भगत सिंह इतनी कम उम्र में भी, इतने ब्रॉड हो गए कि उन्होंने बोला ये भी गलत है ये सही है। आप उन्होंने बोला फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब जैसे थी पहले, भगत जी चरण बोरा ने लिखा, तो उसको भी उससे आगे चले गए भगत सिंह। दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। करतार सिंह सराभा वाज हिज गुरु, नॉट बिकॉज करतार सिंह सराभा वाज trying to overthrow British by army. Kartar Singh Saraba was trying to think what was unthinkable at that time. So HSRA बाद में आ गया। रिजल्ट रिवोल्यूशनरी गोल्स, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, क्विक एक्शन। अब देखो आपने मतलब वायलेंस लिख दिया, नहीं हो सकता ये। तो इसमें हिज फॉर्म्स ऑफ क्या वायलेंस, क्योंकि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज तो प्रमोट की गई थी ना, तो वायलेंस तो उसका पार्ट। प्रमोट नहीं की थी, वो फेज था उनके राइज और ग्रो होने का। जैसे आपने या कोई भी आदमी प्रिपरेशन के दौरान औशिक 2 साल पहले क्या लिखता था क्या सोचता था, तो भगत सिंह भी तो इवॉल्व हो रहे हैं। अब वो चीज पकड़ी जाएगी कि आज की चीज पकड़ी जाएगी? समय के साथ भगत सिंह ने अपने जो हॉराइजन था उनको उन्होंने बहुत ब्रॉड किया। तो इसीलिए बॉम्बिंग ऑफ सेंट्रल असेंबली वाज नॉट इंपॉर्टेंट। ही वाज नॉट ट्राइंग टू बॉम्ब द असेंबली, दैट वाज इंपॉर्टेंट। बॉम्बिंग अगर करनी थी तो पूरी असेंबली उड़ा देनी थी ना, लोगों को मार सकता, तो स्पीकर से मेंबर सबको उड़ा देता। वो उड़ाया उसने किसी को? नहीं सर, हाँ वो। बॉम्बिंग कहाँ से इंपॉर्टेंट हो गई? ही बॉम्ब्ड बट ही डिड नॉट बॉम्ब। हाँ वही हो गया सर, मेक द डेफ ईयर। हाँ, तो मेक द डेफ ईयर तो वो पहले आना चाहिए ना, तो बॉम्बिंग की अंडरलाइन है ना, आपने तो बॉम्बिंग को अंडरलाइन किया। मतलब पूरा आपका इंटेंशन और आइडिया ही रॉन्ग हो गया। पॉइंट नंबर 2 इज ओके, 3 इज ऑल्सो ओके, 4 ठीक है चलेगा थोड़ा बहुत, लेकिन आंसर का वही पहले जैसा था ये भी है, मतलब बोथ नीड रिक्वायर लॉट ऑफ हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एज वी जस्ट डिस्कस्ड। इट इज बिहाइंड, देखते हैं, इट इज बिलीव द नेशन इज एन इमेजिन कम्युनिटी हेल्ड टुगेदर बाय कॉमन बिलीफ हिस्ट्री एस्पिरेशन। व्हाट इज द बेसिस ऑफ इंडिया द नेशन इज सिंगल थ्रेड ऑफ एस्पिरेशन बिलीफ फैटर्निटी इंटेंजिबली द इंटीग्रिटी इन द नेशंस एक्सेप्ट डाइवर्सिटी अडॉप्ट एस्पिरेशन। चलो ठीक है, कैसे? सफिशिएंट कंडीशन कैसे? Because unity in diversity, culture, tradition was there to become peace-oriented and progressive nature. Scriptures, Vedas, Upanishad. Okay, constitutional supremacy to provide ये point number 4 is very good. Threat क्या है? Separatist movement, demand for secession, ethnic violence, communal polarization. ठीक है, अच्छा है, लेकिन जो क्वेश्चन जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा था, दैट वाज वेरी वेरी यू नो क्वेश्चन। देखिए बात कर रहे हैं कि इंडिया क्या है। सो आपको बताना चाहिए कि इंडिया का कॉन्सेप्ट, जैसे उन्होंने भी कोशिश की थी, यू ऑल्सो रिटर्न, इंडिया एज एन कॉन्सेप्ट इज नॉट ओनली एन इट इज नॉट हैविंग जस्ट एलिमेंट ऑफ फिक्शन, इट इज हैविंग एलिमेंट्स ऑफ such elements of humanity which are timeless in nature। भगवान राम के अगर आइडल की बात भी करो, या इवन गुरु नानक देव जी की भी बात करो, या इवन महावीर जैन की बात करो, या बुद्धा की भी बात करो, या कृष्णा की बात करो, या कबीर की बात करो, तो टाइमलेस है वो। सबसे बड़ी बात ये, 2000 साल बाद भी लोग बोलते हैं यार वो सही कह रहा था। यानी उतने समय पहले हमने कह दिया ये है इंडिया। और सिर्फ वही नहीं, इंडिया साइंटिफिक भी था। जीरो बता रहा है, आर्यभट्ट बता रहा है, अल्टर बन रहा है, डैम बन रहा है, ये है इंडिया। इंडिया इज इंडिया इज अ को एग्जिस्टेंस ऑफ रिसोर्सेस। इंडिया ने कोई ऑस्ट्रेलिया नहीं है इंडिया, कि खाली जगह थी और जाके बस गए और एबोरिजिनल्स को साइड में कर दिया। ना इंडिया यूएसए है, 13 कॉलोनीज नहीं है इंडिया। इंडिया है, इंडिया, जहां पे रिवर्स, फॉरेस्ट्स, अर्बन लाइफ, रूरल लाइफ, सब कुछ है, ये है इंडिया। होली है यहाँ पर, टोमेटो फेस्टिवल नहीं होता कि टोमेटो हो रहा है, बफेलो हो रहा है, बियर हो रहा है, ठीक है भाई, वो भी उनका है, हमारा तो नहीं है। ये एक और है क्या? तो मॉडल आंसर्स। चलिए वो भी देख लेते हैं। ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ इंडिया मिरर सोशो पॉलिटिकल पार्लियामेंट। ठीक बात है, हमने भी बताया।
इन्होंने देखो इंडिया का मैप ही बनाया, एक स्टेप और आगे चले गए, भावाई नौटंकी मोटा मोटा लिख दिया, डांड, तुरुकुट्टी, अब वो केरला वाला दिखाना था, रसिया, चलो ठीक है। प्रोपोगेटेड सोशल वैल्यूज देखो, बहुत बेसिक पॉइंट, फ्यूजन ऑफ मास एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन थ्रू वेरियस थिएटर परफॉर्मेंस और स्पेसिफिक लैंग्वेज हो, बिल्कुल सही बात। माइथोलॉजी डिसिमिनेशन, जैसे मैंने बोला था, मिथ्स एंड लेजेंड्स, एंड देन आर्ट फॉर्म्स गेट एक्सप्रेस्ड, आई एग्री विद यू, डांस फॉर्म्स एक्सप्रेशंस, कल्चरल यूनिटी, एग्रीड, एडवोकेटिंग कम्युनिटी, राइटिंग एंड वेलफेयर, इंडिविजुअल रोल हमने बताया लेकिन इस तरीके से नहीं बोला। तो यानी कि आपका थॉट प्रोसेस एक्सप्रेस होना चाहिए, सिर्फ पॉइंट नहीं। मिरर कल्चरल डाइवर्सिटी, तो सारा आ गया, डाइवर्सिटी भी आ गया, यूनिटी भी आ गया। विद इंडिया विनिंग ऑस्कर्स इन 2023 फॉर नट्टू नट्टू, द सीड्स ऑफ सच मार्वल ट्रेसेस ट्रैक बैक टू रिच हेरिटेज ऑफ ट्रेडिशनल थिएटर इन इंडिया, एग्रीड। सांची स्तूपा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सबसे पहले बताया, रिफ्लेक्टिंग रिच वैल्यूज, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, सांची स्तूपा, रॉयल पेट्रोनेज, नो वरीज, सब्जेक्टिव आंसर है, वन कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस। मिरर्स द राइज ऑफ मॉरियन एंड पोस्ट मॉरियन आर्किटेक्चर, डायग्राम इज ऑन द सेम लाइंस। मटेरियल यूज्ड, व्हाइट सैंडस्टोन तो नहीं है वहां पर। उसके बाद स्ट्रक्चर लाइक विहार एंड चित्या, दे लेटर ऑन केम अप, तोराना ठीक है हमने बता दिया। फिगर्स एंड पेंटिंग्स लाइक लेडी विद ब्रांच, शाल बंजीरा बोलते हैं इसको। ऑन स्तूपा हाँ, बाग केव्स का एग्जांपल दे दिया, लिपाक्षी केव्स का दे दिया, लिपाक्षी टेम्पल इन विजयनगर टाइम पीरियड इट इज देयर। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर फ्यूजन आपने ही बताया, पर उन्होंने एक वर्ड और डाल दिया, ट्रेबेट एंड आर्किक सिस्टम, यानी प्रॉपर पढ़ के सेकंड लेयरिंग लेके आ गए। गॉथिक आर्किटेक्चर, यूज ऑफ कियोस्क एंड छतरी, गोल्डन टेम्पल, आई लाइक दैट। भगत सिंह पे आ जाते हैं, चलिए। आफ्टर नॉन कॉपरेशन एंड चौरी फॉर रेवोल्यूशन वर्सेस टंगन, एंड वन ऑफ द सच लाउडेस्ट वॉइस वाज भगत सिंह, चलो यहाँ बता दो। अब आइडियोलॉजी में कॉन्ट्री रिवोल्यूशनरी आइडियाज अगेंस्ट नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह ऑफ गांधी जी, एडवोकेटेड यूज ऑफ वेपन्स एंड वायलेंस टू फ्री इंडिया, ये भी रॉन्ग है, ये आइडिया ही रॉन्ग है, मतलब मैंने जैसा भी डिस्कस किया। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज, एडवोकेटेड सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, ठीक है चलो भाई। वेलफेयर बेस्ड अप्रोच, थर्ड नंबर पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बोला भी था, नौजवान भारत सभा, दैट इज वेरी गुड। अब रिवोल्यूशनरी एक्ट से तो स्टोरी बताया जा रहा है, ये आइडियोलॉजी नहीं था, उनका प्रोसेस था ये। एसोसिएशन से अच्छे सारे जॉइंट एफर्ट, ठीक है चलो ये भी चलेगा। मार्टिर यंग एज ऑफ 23, फर्दर रिवोल्यूशनरीज लाइक उधम सिंह, तो हैंडराइटिंग अच्छी है, जो आता है रटा हुआ आता है, सॉलिड आता है, कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन फिर भी कुछ गलतियां हैं। मेजी रिस्ट्रेशन का आपने छोड़ा था, इन्होंने किया है, स्मॉल आइलैंड आइसोलेटेड एंड डिसएडवांटेज ड्यू टू ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, जब बात इंटरनेट देखो कितना अच्छा बिगनिंग किया, बिगनिंग इज वेरी गुड। राइज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, जापान लीडरशिप, हमने भी वही बताया, लेकिन शायद कॉन्फिडेंस और वर्ड्स का आइडिया थोड़ा ज्यादा है। सिग्निफिकेंस भी बता दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी, अब मान से आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू डोंट नो। जापान इंटीग्रेटेड इंटरनेशनल सोशो पॉलिटिकल सिस्टम, पर विश्वास की बात है नहीं। राइज ऑफ जापान इन्फ्लुएंस, तो आई थिंक वी नो इनफ, we have to just be a little bit more confident and put it, I'm not saying exactly put it like this, but then there has to be an idea. अब इन्होंने बैंडिट एंडरसन का स्टेटमेंट से स्टार्ट किया कि इंडिया क्या है। फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट कॉल नेशंस एज इमेजिन कम्युनिटी वेयर एज विदाउट इवन फिजिकल कॉन्टेक्ट एंड शेयर्ड हैबिटेट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, चलो भाई कैसे। अब इन्होंने बताया नेशन स्टेट बन गया, स्टेट कैसे नेशन बन गया, चलो ठीक है कोई नहीं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल सोवरेनिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी, हिस्टोरिकल यूनिटी, एक करके एक स्ट्रक्चर बना दिया। शेयर्ड कल्चरल वैल्यूज, फेटर्निटी, इंस्टीट्यूशंस लाइक जॉइंट फैमिली, आई लाइक द पॉइंट। शेयर्ड फ्रीडम स्ट्रगल, ये तो थोड़ा यही लेके आया, मैं तो और पीछे लेके जा रहा हूँ, लेकिन he or she is able to divide it into so many elements that examiner can get satisfied somewhere or somehow. सो थ्रेट क्या है, जैसे आप कॉम्युनलिज्म बोला, चलो छोटा सा पॉइंट बता दिया, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है, एथनिक वायलेंस है, इंसर्जेंसी, रीजनलिज्म विद सेशनिस्ट पॉलिसीज। सो हाउ यू आर पुटिंग अप द सेम वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैनॉट जस्ट राइट रीजनलिज्म, जैसा मैंने उस टाइम भी बोला था। एज मोदी जी सेड, ये ज्यादा हो गया, इंडिया इज नॉट अ नेशन बट एन आइडिया बेस्ड ऑन द ब्यूटी ऑफ कल्चरल यूनिटी, मतलब आपको पुश करना है जबरदस्ती, पूरा अच्छे तरीके से उसको कॉन्फिडेंटली पुशअप करना है, हैव टू बी मोर मोटिवेटेड एंड पैशनेट अबाउट द सेम थिंग, एंड देन इट कैन कम अप। सो आशिक, व्हाट डू यू से? सर बस सर जो आपने आइडियाज़ हाईलाइट किया रिगार्डिंग रीजनलिज्म और वो बस मैं चेंजेस करूँगा बस। बाकी जो पुटअप करने का तरीका है जो सिंप्लीफाई हुआ हाँ है राइट, पहले से उसको थोड़ा हाँ और हाँ कॉम्प्रिहेंसिव बनाओ थोड़ा और हाँ, बस। थोड़ा कॉन्फिडेंट, थोड़ा कॉन्फिडेंट, दैट्स ऑल, मानसी।
सो इसी में थोड़ा और जहाँ पे मतलब मेरे को एरियाज एक तो आइडेंटिफाई हो रहे हैं कहाँ पे क्लैरिटी की और जरूरत है, जैसे भगत सिंह वाला क्वेश्चन था उसमें थोड़ा और ब्रॉड होना चाहिए था, उसमें सिर्फ वही जो पता था बस बहुत उसको। ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन सामने आप ये देखिए कि आपको ना मतलब बहुत काम और कॉन्फिडेंट माइंड थोड़ा सा होते ही आंसर थोड़ा और चेंज हो जाएगा। हम्म। ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, हाँ वो सर। मूवमेंट में चाहिए, मूवमेंट के वहां पे चाहिए। जी। So let's go with that, and I'm sure we are going to achieve that also very soon. बहुत ज्यादा वो नहीं है, बल्कि एक्स्ट्रा भी था कुछ कुछ, तो ऐसे ही कुछ भी ऐसा नहीं है। इन द मॉडल आंसर वी ऑल्सो सो भगत सिंह, ये आइडिया नहीं था भगत सिंह की जो लिख रखा, तो आइडिया ही नहीं है लोगों को, लेकिन लिखने के अंदर भी कॉन्फिडेंस है। ये है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम भी है, ये प्लस पॉइंट भी है। जी सर। सो वी विल ऑल्सो ब्रिंग, नो प्रॉब्लम। एनीथिंग एल्स? नो सर। Okay, thank you very much, and we'll get back soon in the next session so that we can continue our journey towards success. Thanks.